Welcome to all my dear students. I am your Rajlakshmi ma'am. Today we will start the very next chapter, chapter number 5, acids, bases and salt. Now let us start chapter number 5, acids, bases and salts. From acids we understand that it is sour in taste, that is lemon or vinegar. It's a type of acid, so it states as sour. Bitter in taste मतलब जो कड़वा होता है टेस्ट में, तो सोप जो है वो स्लिपरी है और वो कड़वा है. Learn about some acidic substance which contain an acid. जिस substance में acid रहता है उसको हम बोलते हैं acidic substance. So acidic substance are of two types. What are the two types? The two types are mineral acids and organic acids. Now let us come with mineral acids. Mineral acids are hydrochloric acid and its formula is what? HCl. Next is sulfuric acid, whose formula is H2SO4. The nitric acid, its formula is, chemical formula is HNO3. These are examples of mineral acid and these are used in laboratory. Now, organic acid. Organic acids are naturally found from plants and animals. So what are the source from which we get the organic acid? We get it by grapes, vinegar, then bee sting, apple, lemon, milk, spinach. So what are these acids are? Grapes contain tartaric acid, vinegar contain acetic acid, string of bees and ants contain formic acid, apple contain malic acid, lemon contain citric acid, milk contain lactic acid, spinach contain oxalic acid, and ascorbic acid are found in amla. Now, strong and weak acids. Acid can be strong or it can be weak. Strong acid means they are highly corrosive. कोरोसिव मतलब ऐसा होगा कि वो उसके वजह से हमको बर्न हो सकता है, जलन हो सकता है. ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो भी होता है उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स. सो ये हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द मेटल. कोई भी मेटल में अगर हम ये एसिड डाल देंगे तो वो मेटल जो है उसमें जंग लग जाएगा. ठीक है. फॉर दैट रीज़न कैनॉट बी यूज्ड इन मेटल कंटेनर्स. इसलिए हम एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं. इसको हम किस में रखते हैं? ग्लास बॉटल में या फिर ग्लास कंटेनर में. वीक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड एंड इट इज द पार्ट ऑफ आवर डाइट. हमारे डाइट में ये होता है जैसे कि विनेगर. सो एसिटिक एसिड में क्या रहता है? विनेगर रहता है. कोल्ड ड्रिंक या फिजी ड्रिंक में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बोनिक एसिड.
टेस्ट अच्छा होता है. तो कार्बोनिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, इट इज अ मिनरल एसिड एंड इट इज अ वीक एसिड. सो स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है, लेकिन वो मिनरल एसिड है, बट वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है. Of acids are sought to taste and are corrosive in nature. Second is acids are soluble in water. Acids has the ability to corrode. corrode मतलब उसमें जंग लग सकता है, एक लेयर हो सकता है किसका, आयरन का. Metals such as iron and aluminium. For this reason acids are generally stored in glass. इसलिए हम ग्लास के कंटेनर में रखते हैं. Water, it dissolved in the water at room temperature and heating to form a clear solution. It contains 3 to 5% solution of acetic acid and water. वाटर अमाउंट ज़्यादा है एसिड में तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, और अगर वाटर अमाउंट कम है उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. Generally, the most important thing about these terms is that they are relative. What do I mean by relative? Here are two beakers on the screen, one on the left and one on the right, and both have 100 milliliters of some colorless solvent. Now in the beaker on the left, I add 20 milliliters of some red solute, and on the right, I add 50 milliliters of the same red solute. In this case, we say that the solution on the right is concentrated and the one on the left is dilute. We are looking at these two relative to each other. And you can see that the concentrated solution is more red in color as compared to the dilute one. This is stronger, we can say. Let me give you another example. We take two empty beakers again, both with 100 milliliters of some solution. The first beaker has 20 milliliters of solute and 80 milliliters of solvent. And the second one has 25 milliliters of solute and 75 milliliters of solvent. Which solution is more concentrated according to you? Yes, it's the second one, because the proportion of solute is more in the second beaker. Now that you know what dilute and concentrated mean, let's move on to understanding what dilute and concentrated acids and bases are. In cases of acids, water is considered to be a solvent and the acid added to the water is the solute. So we have one beaker on the screen here with some water and we add acid to it. As the amount of acid I am adding to the beaker is increasing, the solution is getting more and more concentrated. Now let me ask you an interesting question. When I'm mixing acid and water, should we add water to the acid or should we add acid to the water? To know the answer, what we should know is that the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic, which means a lot of heat is generated. Now, if we add water to the acid, the heat generated may cause the mixture to splash out, which may cause severe burns. And the glass container which contains the solution may also crack due to excessive heating. You'd probably argue that the same would happen when acid is added to the water, right? Not really, and let me explain why. When we add acid to the water, the reaction will still be exothermic, but the water is a very good absorber of heat. Yes, unlike the acid, the water absorbs the heat. And that is why adding acid to water is better than doing it the other way around. But remember, the acid must be added very slowly, drop by drop, and we should constantly stir the solution. Because if we add a lot of acid directly to water, the heat generated will be so large that even water will not be able to absorb the heat. Acids. First we'll start with hydrochloric acid. Hydrochloric acid is a dilute acid used in the industry. इंडस्ट्री में यूज़ होता है हीटिंग के लिए एंड ये अप्लाई होता है टू रिमूव द डिपॉजिट, जो गंदगी जम जाती है इनसाइड द बॉयलर. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं क्लीनिंग द सिंक एंड सैनिटरी वेयर, बाथरूम साफ करने के लिए, इसलिए हार्पिक यूज़ किया जाता है. Sulfuric acid, which is H2SO4, it is called as the king of chemicals. It is used in the industry. So major uses are in the car batteries. It is used in the manufacturing of paint, drugs, dyes and produce the fertilizers.
नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड HNO3. इट इज़ यूज बाय द गोल्डस्मिथ. गोल्डस्मिथ इसको यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को. ये ऑल्सो यूज़ होता है तुम्हारा प्रोडक्शन फर्टिलाइज़र जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है एज ए अमोनियम नाइट्रेट. एसिटिक एसिड CH3COOH. दिस एसिड कंटेन विनेगर. जैसे कि अचार के बॉटल में विनेगर प्रेजेंट होता है ताकि उसको ख़राब ना करे, तो ये एक प्रिजर्वेटिव है. ये हम क्लीनिंग एजेंट्स में भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग डोर्स एंड विंडोज़, फ्लोर्स, यूटेंसिल. इट इज़ यूज टू रिमूव द वुड वर्क सच एज फर्नीचर, कारपेट्स को भी यूज़ करते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो एसिडिक मीडियम, एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं. तो ऐसे जो एसिडिक इन्वायरमेंट में इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये इनकी एक्टिविटी को जो है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है उनको वो रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है. इसीलिए विनीगर को हम यूज़ करते हैं मोस्टली पैकेजिंग फूड में, जैसे कि पिकल्स हो गया, सॉस हो गया, केचप्स हो गया. तो इसमें हम जो है विनीगर का यूज़ करते हैं कि ताकि इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो है वो कम हो या हो ही नहीं. After learning this much portion, I want to ask you some of the questions orally. Let me see, are you able to answer or not? First, true and false. Acid can be stored in metal containers. The answer will be what? False. No, it cannot be stored. Minerals, acid are present in animals and plants. False. Organic acids are present. Dilute acid has more water amount than concentrated acid. Yes, it is true. Sulfuric acid is used for cleaning the sinks and sanitary wares. No, it is false. What it is used? HCl is used. Nitric acid are used by goldsmith for cleaning gold and silver ornaments. Yes, true. Hydrochloric acid is used to enhance the flavor of the food and preservative in the pickle. False. Vinegar. कंटेनिंग अ बेस, जिसमें बेस रहता है उसको हम बोलते हैं, जो सब्सटेंस में बेस रहता है हम बोलते हैं बेसिक सब्सटेंस. जैसे कि एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 आर एग्जांपल्स दैट आर यूज्ड इन द लैबोरेटरी. लैब में यूज होता है. कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग वाइट एटसेट्रा आर अदर एग्जांपल्स ऑफ द बेसिस called as the basic substances. So basic substances odor उसका बहुत strong होता है and can cause harm in skin and eyes. The blanks with correct word. Acids are dash to taste. Acids are sour to taste. Apple contain dash malic acid. Where spinach has dash oxalic acid. Dash acids are highly corrosive, strong. Organic acids are dash weak. Dash acid are present in fizzy drinks. Carbonic acid. बेसिस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग वाटर, मतलब बहुत गंदा स्मेल होता है एंड शुड बी यूज्ड एज अ कॉशन. हम लोग को प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए. इट कैन हार्म द स्किन एंड ऑल्सो द आइज. तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग एज बेसिस आर वेरी कोरोसिव एंड बर्न द स्किन. जला सकता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है. केयरफुली, बहुत सावधानी से यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल में आ गया कॉस्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड कॉस्टिक पोटैश और इट इज़ कॉल्ड एज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा कोरोसिव है. See the other side also of the bases which are weak base. Okay, what are those जो strong नहीं है? Copper hydroxide CuOH2, zinc hydroxide ZnOH2 and ammonium hydroxide NH4OH. ये सभी जो है weak bases हैं. Ammonium hydroxide is produced from dissolving. जब हम ammonium hydroxide को हम प्रोड्यूस करते हैं तो एमोनिया या NH3 है, जब उसको वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हमको मिलता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड. स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. नाउ वी विल कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, बेसिस आर बिटर, मतलब बेसिस जो है वो कड़वा टेस्ट होते हैं, जैसे कि सोप. द सेकेंड है सोल्यूशन ऑफ द बेसिस आर स्लिपरी, जैसे कि सोप को हम छुएंगे तो वो हमको क्या लगता है? स्लिपरी लगता है. थर्ड है कि बेसिस मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल वाटर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो वाटर में सोल्यूबल बेसिस कैन डिजॉल्व इन वाटर, जो बेसिस में डिजॉल्व हो सकता है उसको हम बोलते हैं एल्कलीज. फॉर एग्जाम्पल सोल्यूबल बेसिस आर और एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
of bases. First use is calcium hydroxide used as a slake lime. ये हम सॉइल में यूज़ करते हैं ताकि एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सकें. नेक्स्ट यूज़ होता है वाइट वॉश में. ये ब्यूरेक्स मिक्सचर में भी यूज़ होता है ताकि एग्रीकल्चर के क्रॉप को हम बचा सकें. इज यूज एज अ पेस्टिसाइड्स. नेक्स्ट यूज़ होता है ड्राई मिक्सिंग, जैसे कि पेंटिंग और डेकोरेटिंग आइटम में इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी एसिड एंड इट इज़ यूज टू हेल्प टू अनकरेक्ट एसिडिसिटी. हमारे स्टमक में जो एसिडिसिटी होता है उसको हम कम कर सकते हैं. एक एंटी एसिड खा लेते हैं, जेलोसिल खा लेते हैं, तो डाइजिन खा लेते हैं, तो एंटी एसिड का काम करता है. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ कॉस्टिक सोडा. NaOH, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल में यूज़ होता है. ये यूज़ होता है अनब्लॉक ड्रेन्स के लिए और ये यूज़ होता है सोप और डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं. अभी मैं आपको इसके वीडियोस दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ बेसिस जो है वो यूज़ होते हैं. देन योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर. सो लेट अस सी द Students, वीडियो. the chemical name of lime is calcium hydroxide. Lime water is prepared by dissolving lime in water. Milk of magnesia is a medicine which helps us in digesting our food. It contains magnesium hydroxide, which is a base. The baking soda used in making cake, breads, and in other bakery items contains sodium hydrogen carbonate. When your mother cleans the window, put a drop of solution she is using on your palm and feel it. You will feel slippery on your palm. This is because cleaners are made of ammonium hydroxide, which is a base. What we studied, let's remember. तो एसिडिक सब्सटेंस जो है वो क्या टेस्ट है उसका, सॉर खट्टा टेस्ट है, वो कोरोसिव है और वो वाटर में जल्दी सोल्यूबल हो जाता है. और अगर उसमें वाटर ज़्यादा है तो मतलब वो डाइल्यूट है. एसिड में ज़्यादा वाटर है तो वो डाइल्यूट है, और अगर कम वाटर है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है. स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है. और सोप का जो टेस्ट है वो थोड़ा बिटर होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए वो बेसिक में आता है.